Okay. Once again, very good morning to all of you. Now let me check your scores and then we will discuss about your test. Okay. Okay. Give me 1 minute. It is being open. So how was your test? Just let me know. Tough थी, easy थी, कैसे के एग्जाम? So राहिल जितेंद्र आपने एग्जाम नहीं दी. Okay. करिश्मा. So it is first test. So we can understand 80 marks की एग्जाम थी, 45 minutes. And okay. So करिश्मा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं या जिस क्वेश्चन में हमें पता है कि ये आंसर गलत होगा, जिसमें हम 100% श्योर नहीं है, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें. ठीक है, क्योंकि अभी आपकी फर्स्ट एग्जाम थी इसलिए इनकरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है. साइंस में होती है, आपने एग्जाम नहीं दी. जस्ट लेट मी नो द रीजन. अभिराम गुड मार्क्स. मान से ट्राई करें कि जो क्वेश्चन में हमें डाउट है, जो क्वेश्चन हम श्योर नहीं है, उसको ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो रॉन्ग होते हैं और वो आपके नेगेटिव मार्क्स करते हैं. ठीक है. सेम साम्या, चुलिका, रिया, जिसमें भी डाउट हो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो. सो रिया, पिछले एग्जाम से आपका इंप्रूवमेंट है, अच्छा है. ओके. कोशी, गुड मार्क्स, नाइस. सानिया, अगेन वही इनकरेक्ट क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है. ओके. आर्यन, गुड, गुड मार्क्स. निधि, हाँ निधि का और स्नेहा का मुझे पता है. ओके. जय शरण, ओके गुड. समर्थ, ओके समर्थ सेम इनकरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो. जिस क्वेश्चन में डाउट है वो हमें नहीं करने हैं. ओके. अनगा, गुड. अगेन ट्राई टू रिड्यूस योर इनकरेक्ट क्वेश्चन, स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. ओके. प्रांजल सेम. माय सजेशन टू यू इज आल्सो कि इनकरेक्ट क्वेश्चन वाले जितने हो सके उतने कम करो. ठीक है. ओके. प्रद्युम्ना वेरी गुड. ओवेश गुड. श्रीहरि गुड. सेम इनकरेक्ट क्वेश्चन थोड़े और कम करो. अनिशा गुड. मीट, इनकरेक्ट क्वेश्चन कम करो, आपका स्कोर कम हुआ है पिछले एग्जाम से, सो इट इज नॉट गुड. ओके. सिद्धार्थ, ओके सिद्धार्थ गुड, गुड. अनुराग, अनुराग ये इनकरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो. ओके. अमीश, ठीक है अमीश और करना है. रौनक, गुड. विवेक, ओके सेम इनकरेक्ट क्वेश्चन वाले ज्यादा हो रहे हैं. कृष्णा, इनकरेक्ट क्वेश्चन. प्रद्युमन, ओके गुड. तुलिप, इनकरेक्ट क्वेश्चन. तो अभी जितने स्टूडेंट्स को मैंने बोला इनकरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो. ठीक है. हाँ यस जितेंद्र, आई आई गॉट योर थिंग. इंटरनेट एरर, वो इंटरनेट का ध्यान दो. हाँ. ओके. चलो तब आपके टेस्ट क्या हम डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं फटाफट. तो आपके टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, राइट, जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, क्विकली टाइप इन चैट बॉक्स सो दैट वी कैन सी दोस डाउट्स नाउ. राइट. आपको आपके टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस में डाउट्स हैं, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स. ओके. वेट हियर. Okay. So let us see your doubts. So
You all have typed, I think, till now, and you are having doubts in question number 5, 6. Wait for 1 minute. Question number 5, 6, 10, 16, 18, 8, 20. Okay. ओके अभिराम, वी कैन अंडरस्टैंड, यही है, दिस आर प्रैक्टिस एग्जाम्स, राइट। ये प्रैक्टिस एग्जाम में आपको इसीलिए अभी हम एग्जाम दे रहे हैं ताकि यहाँ से आपकी जो जो गलती हो रही है वो सारी चीजें पता चले, राइट, और हम उनको इम्प्रूव कर पाए नेक्स्ट एग्जाम में। सो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते रहना है, दैट्स इट। तो अभी गलतियां करो, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, सर्फ एक्सेल, राइट, मिस्टेक्स आर गुड, दाग अच्छे हैं, मिस्टेक्स अच्छी हैं। अभी गलतियां करो, अभी जितना गिरना है गिर जाओ, अभी जितना डाउनफॉल होगा उतना फिर एग्जाम में आप अब जा सकते हो। ओके, क्योंकि अभी ये सारी मिस्टेक से आपको सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। मिस्टेक से सीखो आगे बढ़ो, मिस्टेक से सीखो आगे बढ़ो। तो जस्ट डू मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। ओके, सो 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 2 and 4 भी ऐड हो गए, चलो। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। Okay, so first you are having doubt in question number 1. It's here. In question number 1, they are asking, out of 50 students, there are total 50 students, 15 passed in English, 12 passed in mathematics, 8 passed in science. 15 passed in English, 12 in mathematics, 8 in science, 6 in English, 6 in English and mathematics exactly, because English repeat हो रहा है. 7 in science and mathematics, suppose उनको साइड पे लिखता हूँ, तो 6 in English and mathematics, 7 in science and mathematics, 4 in English and science, and 4 in all three. How many students passed in science and mathematics but not in English? So how many students passed in science and mathematics but not in English? Science and mathematics and not in English. That is English dash. ओके, तो ये आसान क्वेश्चन है। अब इसको समझो, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, कितने स्टूडेंट्स आपके साइंस एंड मैथमेटिक्स में पास हुए एंड इंग्लिश में नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन science, and means intersection maths, and means intersection English dash. So this is written as, जैसे आप number of elements in A intersection B, समझना, A intersection B बार, इसको आप क्या लिखते थे, A intersection B बार, या number of elements in A intersection B बार, ये क्या था, number of elements in A minus B, that is number of elements in A minus number of elements in A intersection B, जितने दोनों में कॉमन है वो कॉमन निकालेंगे, right? So moral of the story, number of elements in A intersection B bar is number of elements in A minus number of elements in A intersection B. Is it clear? Right? क्या ये याद है डेफिनेशन? अगर ये याद नहीं है तो just let me know. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बार, क्योंकि अगर ये पता है तो अब ये आप हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन एम माइनस सी, isn't it? नहीं तो मैं आपको वेन डायग्राम से भी बताता हूँ। So it is number of elements in S intersection E, sorry, S intersection M minus number of elements in S intersection M intersection E, right? Now tell me how many elements are there in S intersection M? So those are in S and M. Those elements are 7 minus in all three 4. 7 minus 4 is 3. So if we'll draw its Venn diagram, so we are having English, maths, and science. This is English.
this is maths, this is science. Now in science and maths, so in science and maths means here, in science and maths, we are having total 7 elements. And from these 7 elements, 4 elements are lying here in this portion. Right. So 4 elements are here. Right. So here, this total part, that is science intersection M, it contains 7 elements. उसमें से 4 elements यहाँ पे हैं, तो definitely 3 elements यहाँ पे होंगे. And what they are asking, we have to find number of elements in science intersection M, but not in English. So science and M and not in English. So it is 3. Is it clear now? Students, please give me some response तो मुझे पता चले कि you are getting or not, so that I can move forward. Okay. So shall we move to next class? Okay. So this is your question number 1. After that, you are having doubt in question 2. Now let us see your question 2. In question 2, they are telling that 2 finite sets have small m, and n elements. Okay. Then the number of subsets of first set is 112 more than that of second set. That of second set is number of subset only. The value of m and n are respectively. So it is also easy question, isn't it? So who will tell me there are how many number of subsets? If you know number of elements in any set, right? Then suppose I am having that in this question, as they are telling that set A is a finite set which is having m elements, set B is having n elements, right? Then tell me what will be the number of elements in subset of A, or how many subsets of A can be possible, right? So number of subsets of A, yes, very good. So number of subsets of A will be 2 to the power m, and number of subsets of B will be 2 to the power n. And as they are telling in the question that A के जो subsets हैं वो B के subsets से 112 ज्यादा हैं. Okay, so your 2 to the power m is equal to 2 to the power n plus 112, isn't it? Now अब यहाँ से ट्रिकीनेस शुरू होती है. इतना तो सब कर लेंगे, ठीक है. अब यहाँ से हमें वैल्यू कैसे निकालनी है समझना, 2 to the power में. तो first we will simplify as it is 2 to the power m minus 2 to the power n is equal to 112. नाउ अब 112 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे. पहले प्राइम 112 को 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, राइट? सो इफ यू प्राइम फैक्टराइज 112, we'll obtain first 2, 56, 2, 28, 14. So it is 2 to the power 4 into 7, isn't it? Now here जैसा कि हमने देखा था क्लास में, आपको याद होगा, राइट? सो हियर फ्रॉम 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n, हाँ आप दो तरीके से आगे बढ़ सकते हो, राइट? आइदर आप 2 टू द पावर n को कॉमन निकाल दो तो इट विल बी 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1, और 7 को हम 2 की पावर के फॉर्म में लिखें तो हम उसको 2 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आई एम शोइंग यू बोथ द वेज, जिस जो वे आपको अच्छा लगे. ये वे ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्लास में, राइट? सो सपोज यहाँ पे मैं 2 टू द पावर m कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 to the power n कॉमन निकाल रहा हूँ. यू कैन टेक एनी कॉमन, सो इट विल बी 2 to the power m minus n minus 1, isn't it? ये स्टेप पता चला, ये हम कर चुके थे एक्सपोनेंट्स में. So it is equal to 2 to the power 4 into 7. So if we'll compare both of them, so here 2 to the power n equal to 2 to the power 4, that is n equal to 4, and on the other hand 2 to the power m minus n minus 1 equal to 7, right? So 2 to the power m minus n is equal to 7 plus 1, that is 8. So and 8 is 2 cube, so m minus n is equal to 3, and recently we got n as 4. So if I put n 4 is equal to here, so m is equal to 3 plus 4, 7. So m is equal to 7 and n is equal to 4. Is it clear? Now, so this is one way. M is equal to 7 and n is equal to 4. Okay. Now the other way is
यू कैन ये RHS को हम 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो दिस 7 को मैं लिख रहा हूँ 8 माइनस 1, राइट. बाहर 2 टू द पावर 4 तो है ही. सो इट इज 2 टू द पावर 4, 8 इज 2 क्यूब माइनस 1. अब 2 टू द पावर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3, इट इज 2 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 4. सो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो n7 एंड n4 मिल जाएगा. सो यू कैन यूज एनी मेथड. ये मेथड ऑलरेडी हमने की है. ओके. सो बोलो आपको कौन सी मेथड इजी लगी, फर्स्ट वन और सेकंड वन? टाइप इन चैट बॉक्स. ओके ओके, यू कैन यूज. ओके, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं. नाउ सेकंड के बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट अस सी दैट. think wait for 1 minute. What is it? Now, first and second are done, right? Now you are having doubt in 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, and 14. Okay. So let us see your question number 4. In question number 4, they are asking that a set A intersection B dash whole dash union B intersection C. So A intersection B dash whole dash union B intersection C. And in the option, okay, they were given 4 different options. Okay. So you can do this by first, we can try this with normal simplification, or we can do this with Venn diagram also. Right. Let us try both the approaches. Right. And then we'll see कौन सा approach आपको easy लग रहा है. So here, if I use first De Morgan's law, so it will be A dash union B dash whole dash, it is B only, union B intersection C. So it is A dash union B intersection C. So it is some set which is having an intersection with another set B intersection C. Suppose this intersection is this set is D. This combination is D. So it is D union B intersection C. So now I can apply distributive law, that is D union B intersection D union C. Okay. Now what is my D over here? D is A dash union B. So D is A dash union B and union B. Now intersection D is A dash union B union C. Now A dash union B वो तो आपका A dash union B ही होगा, isn't it? Now intersection A dash union B union C. Right. अब समझना. Now what we are having is आपको दिया गया है A dash union B intersection A dash union B union C. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा? कॉमन सेंस. सी, my voice is breaking. See, this is A dash union B. This is also A dash union B. Right? It is union C. That means ये मान लो कोई दूसरा सेट है E. आप E का C के साथ यूनियन कर रहे हो, फिर उसमें से आप E का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो. सो व्हाट यू विल गेट, ये E है, इसका आप C के साथ यूनियन कर रहे हो, ये पूरा यूनियन मिल गया. Is my voice breaking? Just let me know.
अब इसके साथ जब मैं e का इंटरसेक्शन करूंगा, इफ आई डू इंटरसेक्शन विथ इट, so its common part will be only e, right? So e will be my common part over here. So my answer is a dash union b. I will repeat, don't worry. So, or I will explain here with Venn diagram, so it will be more easier to you. So we are having here a, b and c. Three sets. Now they're telling a intersection b bar whole bar union b intersection c. अब ये तो common sense है कि a dash union b हो जाएगा. So first let us try to figure out what is a dash and b and what is a dash union b. So this portion will be a dash, right? a के बाहर का पूरा portion मुझे मिल जाएगा a dash. This is a dash. And now a dash union b. Union means you are adding, right? A dash union b. What is your b? b is this. So उसके साथ आप union करोगे तो ये part add हो जाएगा. Right? We have to take all the elements. So this is my a dash union b. Now b intersection c. So what is b intersection c? So this is b and this is c. So this portion is b intersection c. Okay. Now what we have to do? Now we are having a dash union b, which is highlighted with blue. B intersection C, which is highlighted with black. Now we have to find union of both of them. So union means we will be having this whole, right? So we are having this whole. My mistake, in A dash union B, this portion will be also there. Okay, this I forgot, because in B it contains this as well as this. So in A dash union B, this portion will be there, and this is already here highlighted. So obviously if I am doing its intersection, or sorry, if I'm doing its union, so I am having this part covers whole a dash as well as this b, right? So from Venn diagram it is a dash union b. Or if you are not getting from Venn diagram how it is a dash union b, you can go from options and you can try to plot each and every Venn diagram. So from here you can plot a dash union b. So A intersection B dash whole dash union B intersection C is equal to A dash union B union B intersection C. Okay. So now suppose ये आपका D है, so it is D union B intersection C. So it is D union B intersection D union C. Let us put value of D. So it is A dash union B union B union B union B. आपका एक ही को कितनी भी बार यूनियन करो आंसर वही आएगा. So A dash union B. Intersection A dash union B union C. Now you can see over here A dash union B is common, right? Suppose वो आपका E है, so it is E intersection E union C. So what you will get final answer is E, right? Because E union C करके उसमें से E का intersection करोगे तो E will be common. And what is your E? A dash union B. Is it clear? Voice is breaking. Wait, we can wait for 1 minute. So shall we proceed or do we have to wait for the means अगर voice का issue ज़्यादा है तो just let me know, raise your hand. How many students are not able to hear me properly? Okay. So let us move forward. So in question number, after question 4,
You are having doubt in question 5. So in question 5, let us see what they have given. If x is equal to 8 to the power n minus 7n minus 1, n belongs to capital N, and y is equal to 49n minus 49, where this n belongs to capital N. Then x is subset y is subset x is equal to y, or x intersection y is null set. Right. Now Samarth is telling that screen is not clear. Is it so? I think it is clear, isn't it? Now, so here let us try to find out what will be the elements in set X as well as in set in elements Y. Okay, so here since small n belongs to capital N, so let us see for each value of small n what will be the elements in X and what will be elements in Y. So here elements in small n are 1, 2, 3, like that, so on. So your x will be 8 to the power 1 minus 7 minus 1. So it is 8 to the power 1 minus 7 minus 1. So it is 0. Isn't it? 8 minus 8 is 0. And if I put x is n is equal to 1 in y, so I will get 49 and minus 49. So it is also 0. Right? 49 minus 49. So let us put 8 equal to 2. So it is 8 square. That is 64. 7 to the 14 minus 1. 64 minus 14 is 50, and 50 minus 1 is 49. So here I'll be having 49. So what about here? If I put n is equal to 2, 49 to the 98. 98 minus 49 is 49. So this is also same. So let us go for n equal to 3. So this is 49 into 3 minus 49. So that is 49 into 2 only. So I think this will give you 49 into n only, right? That is 98. But this is actually 49 into n minus 1 if you take 49 common. So it is 49, it is 49 into 2, it is 49 into 3, and so on. Chalta rahega. Okay. Now, what about here? If I put n is equal to 3, it is 8 cube. What is 8 cube? 512, isn't it? Minus 7 3s are 21 minus 1, that is 22. तो अगर यहाँ से 12 निकल जाएगा तो it will be 500 and it will be 490, isn't it? For n is equal to 3. Okay, and definitely this 490 will come here. Okay, 49 into 10. So from this and this we can say that कि आपके जो x के एलिमेंट है वो y में बिलोंग कर रहे हैं, but this is not the proper way. Okay, but Abhiram here they are telling that small n belongs to capital N only, so we cannot take small n equal to 0. Okay, so what will be the proper way? Okay, Abhiram is suggesting one way, it is also good. So just we will compare this 8 to the power n minus 7n minus 1 with 49n minus 49. So here Abhiram is suggesting that, sir, we can write 8 to the power n as 7 plus 1 whole to the power n minus 7 and minus 1. But then again, अब यहाँ पे हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे. Your y will become 49 into n minus 1. This is 8 to the power n minus 7 and minus 1. The issue is of this. Let us see. So if I write this as it is only 49n minus 49, so 8 to the power n is equal to 49n minus 49 plus 7n plus 1
Sir, from this we can see that x is a factor of 7. So if it is 7 plus 1 whole to the power n, from here how we can say that it is factor of 7, Aviram? Here I will show you one thing in binomial theorem that we will see in chapter number 9. But till then, we are having this option only. So 49 plus 7, 56 and 4 minus 49 plus 1 minus 48. So it is equal to, if I take 8 as common, it is 7n minus 6. So here it is 8 to the power n. एक 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 8 to the power n minus 1 equal to 7n minus 6. So if I put n equal to 1, it is 1. If I put n is equal to 2, it is also there. If I put n equal to 3, it is not satisfying. So from here we can find few values of n for which this value is satisfying, right? So for few values of n, your elements of x will be belong to elements of y. So that's why we can say x is subset of y. Okay. Or from this only we can see here. Okay. So no need of doing this. This will be cumbersome here. And yes, Abhiram is telling if we expand. So Abhiram, अभी आपने कैसे expand किया? Binomial theorem. You know this binomial theorem? क्या ये आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हो? Okay. हाँ, then no issue. Right. हाँ, यहाँ से हम ये कर सकते हैं. If you will expand this from binomial theorem, so plus 1 and minus 1 will get cancelled out. So this is also multiple of 7 and this is also multiple of 7. So from there we can get something. Okay. So is it clear? तो पर्टिकुलर ये वाले क्वेश्चन में फिलहाल के लिए हम सारी वैल्यूज डाल के देख रहे हैं. जब हम बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे तब ऐसे उसके बाद जब आप ये चैप्टर का रिवीजन करोगे तब आप इसी क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम की मदद से करने की कोशिश करना. ओके, तब और आसान हो जाएगा. It is 1 plus 7 to the power n. So it will become your easily 1 plus x to the power n. We'll see binomial theorem for this. Right. So in which we'll enter this 1 plus 7 to the power n. Yes, it is an important question. Every question is important. So you are clear with this? Shall we move to next question? Right, and don't rely on this method, right? Because this method is not appropriate for all the questions. Because हो सकता है कि यहाँ पे n की कोई वैल्यू के लिए x की वैल्यू ऐसे भी मिले कि जो y में ना हो, राइट? बट अगर आप आपके ऑप्शंस देखें सिर्फ इतनी वैल्यू से, तो ओनली x सबसेट y इज पॉसिबल. यहाँ से y सबसेट x तो होगा ही नहीं, x इक्वल टू y भी नहीं होगा, एंड x इंटरसेक्शन y भी फाई नहीं होगा. तो यहाँ से आप डायरेक्ट फिर आपको ऑप्शंस को देखना पड़ेगा. अब ऐसा कोई क्वेश्चन में आ रहा हो और ऑप्शन में एक आंसर दिया गया, नन ऑफ दिस, देन इट इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट? तब आप इस तरीके से नहीं कर सकते. हाँ, वो मैंने बोला. हाँ, चलो आगे बढ़े. So after question 5, you are having doubt in question number 6. Is it clear na? Question 5 clear, everyone? Just let me know, students. एंड अगर कोई भी इश्यू फेस कर रहे हैं एग्जाम में, स्पीड कम है, कुछ भी है, जस्ट लेट मी नो.